Hello, you're watching Hornbill TV's Primetime Bulletin. Now headlines. The Vice President of the United States, J.D. Vance, defended the alleged trade war and said critics have attacked Donald Trump of starting a trade war in an effort to bring back jobs of the past, and stated that Trump seeks to rebalance global trade. At least over half a dozen of tourists were injured after terrorists opened fire at a resort in Pahalgam, Anantnag district of Jammu and Kashmir on Tuesday, police said. Prime Minister Narendra Modi landed in Saudi Arabia's Jeddah on Tuesday for his two-day visit to the kingdom nation. He was warmly welcomed with a 21-gun salute upon landing. Union Public Service Commission declared the final result of the Civil Services Examination 2024 on Tuesday, and 1,009 candidates have been recommended. Shakti Dubey from UP's Prayagraj secured the top rank. Now the news in detail. The Vice President of the United States, J.D. Vance, who is in India on Tuesday, defended the alleged trade war and said critics have attacked Donald Trump of starting a trade war in an effort to bring back jobs of the past. He, however, stated that Trump seeks to rebalance global trade so that America, with friends like India, can build a future worth having for all the people together. Vance also said America and India have officially finalized the terms of reference for the trade negotiation. Have attacked my president, President Trump, for starting a trade war in an effort to bring back the jobs of the past, but nothing could be further from the truth. He seeks to rebalance global trade so that America, with friends like India, can build a future worth having for all of our people together. And when President Trump and Prime Minister Modi announced in February that our countries aim to more than double our bilateral trade to $500 billion by the end of the decade, I know that both of them meant it. And I'm encouraged by everything our nations are doing to get us there. As many of you are aware, both of our governments are hard at work on a trade agreement built on shared priorities, like creating new jobs, building durable supply chains, and achieving prosperity for our workers. In our meeting yesterday, Prime Minister Modi and I made very good progress on all of those points. And we are especially excited to formally announce that America and India have officially finalized the terms of reference for the trade negotiation. I think this is a vital step. Thank you. I believe this is a vital step toward realizing President Trump's and Prime Minister Modi's vision, because it sets a roadmap toward a final deal between our nations. Speaking at an event in Rajasthan's Jaipur, Vance said earlier, like India, America wants to appreciate its history, culture, religion, wants to do commerce and strike good deals with friends. He stated that he is working for a president who has long understood all of this, whether through fighting those who seek to erase American history or in support of fair and trade deals abroad. He has been consistent on these issues for decades, and as a result, under the Trump administration, America now has a government that has learned from past mistakes. The working class, the background of the United States of America, were dismissed as backwards for holding on to the values their people had held dear for generations. Now, Middletown's story is my story, but it's hardly unusual in the United States of America. There are tens of millions of Americans who, over the last 20 or so years, have woken up to what's happening in our nation. But I believe they woke up well before it's too late. Now, like you, we want to appreciate our history, our culture, our religion. We want to do commerce and strike good deals with our friends. We want to found our vision of the future upon the proud recognition of our heritage rather than self-loathing and fear. I work for a president who has long understood all of this, whether through fighting those who seek to erase American history or in support of fair trade deals abroad. He has been consistent on these issues for decades. And as a result, under the Trump administration, America now has a government that has learned from the mistakes of the past. It's why President Trump cares so deeply about protecting the manufacturing economy that is the lifeblood of American prosperity and making sure America's workers
At least over half a dozen of tourists were injured after terrorists opened fire at a resort in Pahalgam, Anantnag district of Jammu and Kashmir on Tuesday, police said. A senior official confirmed that the army and Jammu and Kashmir police have rushed to Baisaran meadows in the Pahalgam tourist town after shots were heard. A search operation is also underway. Police officers in the area helped to bring the injured to the hospital. Visuals shared showed some of the tourists were visibly distraught. Women and elderly were among those who were attacked by the tourists. Top police sources earlier said gunshots were also heard near a meadow in Baisaran, Pahalgam. As Verdi officials, terrorists opened fire for about 3 to 5 minutes before fleeing the scene. Around 5 to 6 people were injured, including one critically who has been shifted to the Anantnag district hospital. The number of injured could rise as security forces continue their operation and more details emerge. Rescue and medical teams are on the scene and authorities are closely monitoring the situation. A joint operation has been launched by the Indian Army's Victor Force, Special Forces, JKP SOG and CRPF 116 Battalion. Officials have clarified that the incident did not occur along the Pahalgam-Doda axis. जम्मू कश्मीर अनंतनाग जिले के पहलगाम इलाके से हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं, जो कि एक बड़ी खबर है कि टूरिस्टों पे यहां पर टेररिस्ट ने हमला किया है, जिसमें बताया जाता है कि 12 जो टूरिस्ट है वो जख्मी हुए हैं। हालांकि इलाज मुआवजा उनका चल रहा है। बज़रिए चॉपर इनको एवैक्यूएट किया गया है उस जगह से। बैसरन का ये इलाका बताया जा रहा है जहां पर ये हमला हुआ है। आज सुबह ये घूमने गए थे वहां, तो अचानक नामालूम बंदूक बरदार ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसकी जद में आकर 12 जो टूरिस्ट है वो जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि आपको बताता चले कि ये इलाका जो है अब कुछ ही महीने बाद ही जो है यात्रा शुरू होने वाली है, तो इस तरह के हमले होना बाइस तशवीश है। हॉर्नबिल टीवी के लिए मैं अनंतनाग से रूप राठौर। Prime Minister Narendra Modi landed in Saudi Arabia's Jeddah on Tuesday for his 2-day visit to the kingdom nation. He was warmly welcomed with a 21-gun salute upon landing. During his visit to Saudi Arabia, PM Narendra Modi will co-chair the second leaders meeting of the India-Saudi Arabia Strategic Partnership Council with Crown Prince and Prime Minister HRH Prince Mohammed bin Salman. India and Saudi Arabia are set to sign at least 6 memoranda of understanding on Tuesday during Modi's visit to Jeddah. Highly placed sources told media that Modi will also discuss issues relating to Hajj, including the quota for Indian pilgrims, during his meeting with the Crown Prince and Prime Minister of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman Al Saud, in the evening. Among the deliverables, the two sides are expected to sign agreements in the fields of space, energy, health science and scientific research, culture and advanced technology. मेरी मंजिल है पहचानी तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचानी तुझी से। पुंजो भी जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पुंजो भी जहाँ भी मेरी रहे तू, वतन वतन मेरे याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, वतन मेरे वतन। Union Public Service Commission declared the final result of the Civil Services Examination 2024 on Tuesday, and 1,009 candidates have been recommended. Shakti Dubey has secured the top rank, followed by Harshida Goyal at rank 2 and Dongre Archit Parak at rank 3. A consolidated reserve list of 230 candidates has also been maintained in accordance with Rule 20 Clause 4 and Clause 5 of the Civil Services Examination Rules 2024. Among the 1,009 candidates selected, 335 belong to the general category, 109 to the economically weaker sections, 318 to other backward classes, 160 to scheduled castes and 87 to scheduled tribes. This includes 45 candidates with benchmark disabilities across 4 categories. The written exam was conducted in September 2024 and interviews were conducted between January and April 2025. After the declaration of results, Union Minister Jitendra Singh congratulated the All India top 3 candidates and stated that once again the top 2 positions have been occupied by women.
The proud parents of topper Shakti Dubey expressed their excitement. सब प्रभु की कृपा है, भगवान की कृपा से, महादेव भोलेनाथ की कृपा से टॉप की है। हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। किस तरह से पढ़ाई होती थी, क्या कितने बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, बहुत कैसे ज़्यादा। उन्होंने पढ़ाई की, क्या क्या हुआ? दिन भर पढ़ती थी, रात में भी पढ़ती थी, काम भी करती थी। अब हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी। अब क्या कर रही हैं? वो कहाँ रहती हैं, कैसे? दिल्ली में है। हाँ, दिल्ली में। कब वो आएंगी? कितनी कल खुशी आ आप जाएंगे। लोग को? बहुत खुशी है। किस तरह से इस खुशी को मना रही हैं? चलिए ठीक है। जी, किस तरह से इतनी खुशी? बस भगवान के शरण में। कहाँ के आप लोग हैं निवासी? बलिया के। ठीक है, तो अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बेटी आ रही है आपकी? हाँ, कल आ रही है। ठीक है, नाम बताइए अपना। मेरा नाम प्रेमा दुबे। और बेटी का? शक्ति दुबे। ठीक है। बहुत खुशी है। कैसे पढ़ाई किया, कैसे पढ़ाई स्ट्रगल किया, आपका क्या योगदान रहा? अब देखिए, पढ़ाई में योगदान हमारा था कि उनको पढ़ने के लिए जो भी व्यवस्थाएं थी वो हमको उपलब्ध कराना था। बाकी बच्ची का मेहनत और ऊपर वाले की कृपा, उसकी मेहनत का फल आज हमको देखने को मिल रहा है। इससे बहुत प्रफुल्लित हैं हम, बहुत ही खुश हैं। कितनी मेहनत इसमें लगी है और मेहनत कितने साल का इसमें स्ट्रगल रहा? अब देखिए, मेहनत तो उन्होंने काफ़ी किया, लेकिन अब पिछले साल इंटरव्यू तक गई थोड़ी देर के लिए अपना। अच्छा। अब क्या था क्या नहीं, उसमें अपना जो है नहीं हो पाया। और ऊपर वाले की कृपा थी कि इससे बड़ी उपलब्धि देनी थी, इसलिए ब्रेक कर दिया उन्होंने इस साल। किस तरह से बचपन से उनका स्वभाव रहा? स्वभाव बहुत शांत स्वभाव था। पढ़ाई लिखाई के किसी कार्य के प्रति लगन बहुत था, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उसकी का नतीजा? उसका नतीजा आप क्या करते हैं, कैसे उनको? हम पुलिस विभाग में हैं। बाकी तो देखिए, हमारी मिसेज हैं, उन्हीं की सब व्यवस्थाएं थी। और हम तो बाहर रहते थे, बाकी तो ड्यूटी से लौटते थे। जो उनकी आवश्यकता की सामग्रियां रहती थी, हमको मैसेज मिल जाता था, वो ले आकर के उपलब्ध करा देते थे। तो नौकरी में रहते हुए कैसे उनका साथ देते थे? अब नौकरी पढ़ाई करती थी? अब देखिए, वो तो समय मिल जाता था, उसी हिसाब से अपना ऑफिशियल वर्क अभी तक मैंने किया शुरू से ही पुलिस विभाग में। फील्ड की ड्यूटी बहुत कम किया। और ये हमारे उच्च अधिकारीगण का वो था कि हमको समय समय पर मौका मिलता रहा, इसलिए मैं इनका सहयोग करता रहा। महकमे में किस तरह से खुशी कही? अरे महकमे में तो अभी डीसीपी साहब मिले थे हमारे, उनसे मैं बताया। फिर एडीसीपी ट्रैफिक साहब मिले थे, उनको बताया। इसके बाद मैं सीधे यहाँ कमरे चले आया। लगे लोग फोन करने, तो हमने कहा चलें जरा घर पर देखें क्या। कब आ रही हैं? अब कल। Harshida Goyal, who secured second rank in the UPSC Civil Services examination, said she is the first from her family who will become a civil servant. Stating that she had immense support from the family, she said she wants to become an IAS with the goal to bring about a change in people's lives, especially women. सर, मेरा नाम हर्षिता गोयल है और मैंने यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल किया है। यस सर। गोयल, आप बताइए कि आपके जिस तरह से आपने पूरी पढ़ाई की है, किस तरह से पूरा अपने फैमिली का सपोर्ट, किस तरह से बैकग्राउंड रहा, किस तरह से ये सब सक्सेस करने में आपको क्या क्या सपोर्ट मिला? सर, फैमिली में तो मैं पहली हूँ जो सिविल सर्विसेज में आई हूँ और क्रैक किया है। और मेरी फैमिली का भरपूर सपोर्ट था सर, स्पेशली मेरे पापा का। मेरे मम्मा नहीं है, तो पापा ने पूरा घर संभाला है। मेरा छोटा भाई है, उसको संभाला है, दादा दादी को संभाला है। और मुझे बस इतना कहा है कि बेटा तू जाके पढ़ाई कर, अपना सपना अचीव कर। तो मेरे पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है सर उसकी वजह से। और मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा है। स्पीपा ने इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स के सपोर्ट की मदद से मैं कर पाई। तो ओवरऑल सर सबके मदद से मैं क्रैक कर पाई हूँ। सिविल सर्विस में जुड़ेंगे कहीं ना कहीं, क्या टारगेट के साथ क्या अचीव करेंगे और क्या अपना गोल आप रखेंगे जिसके कारण सोसाइटी को या गवर्नमेंट को, लोगों को आप हेल्प करेंगे? क्या टारगेट है? सर, मैं आईएएस बनना चाहती थी और मेरा गोल यही था कि मैं लोगों के लिए कैसे उनकी लाइफ बेटर बना सकूं। और मेरा स्पेशल फोकस रहेगा औरतों की लाइफ को बेटर करना, अपलिफ्ट करना, उनको अपलिफ्ट करना, कि मैं एक इंस्पिरेशन बन सकूं जिनसे वो भी आगे आए और आगे आके अपने परिवार का नाम भी रोशन कर पाए। और सर, साथ ही में जो बच्चे हैं जो स्लम्स में रहते हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं होती, एजुकेशन का स्कोप नहीं होता, उनके लिए मैं कैसे एक ब्रिज की तरह काम कर सकती हूँ। गवर्नमेंट ने जो भी सुविधाएं दी है उनको कैसे लोगों तक पहुँचा सकती हूँ, वो सब चीज़ों में सर मेरा योगदान रहेगा। एक महिला हो के आपको इस तरह से जिम्मेदारी मिलेगी, आप किस तरह से पूरे फुलफिल कर पाओगे और क्या स्ट्रॉन्ग बन के और महिलाओं को एक मजबूत बनाने की
सर, महिलाओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। एक किसी महिला को पता नहीं होता है, क्योंकि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है जहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से महिला अपने आप को आगे नहीं रख पाती है। और मैं यही चाहूँगी कि यही जो टैबू है उसको मैं ब्रेक कर पाऊँ और महिलाओं को प्रोत्साहन कर पाऊँ, और उसके साथ साथ महिलाओं के जो मेल फैमिली मेम्बर्स हैं उनको इंस्पायर कर पाऊँ कि वो अपनी घर की महिलाओं को इंस्पायर करें कि ताकि वो आगे आ सके, उनका सपोर्ट सिस्टम बन सके सर। क्योंकि मेरी सफलता का कारण भी सर मेरे पापा है, तो ऐसे ही मैं सबको इंस्पायर करना चाहूँगी। यूपीएससी क्लियर किया, किस तरह से आपको पूरे किस एजुकेशनल बुक्स या किस तरह से मोबाइल या किस तरह से सोशल मीडिया किस तरह से सपोर्ट मिला या तो जिसके कारण आप आज सफल हो पाए? सर, मैंने मेरा जो फाउंडेशन कोर्स था वो विजन आईएएस से किया था, तो वो मेरा बेसिक था। उसके बाद सर मेंस के लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी यहाँ पे अहमदाबाद में। सिम्बायोसिस आईएएस है विवेक ठाकर सर का, तो उनकी मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज़ की थी और इंटरव्यू में काफ़ी सारे क्लासेस के मॉक इंटरव्यूज़ किए थे। तो ये सब की मदद से सर मेरी पढ़ाई रही और सेल्फ स्टडी है। बाकी स्टूडेंट्स के साथ जो डिस्कशंस होते हैं यहाँ पे स्पीपा में, वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं। एक आपका अगर पीयर ग्रुप होता है तो वो सब की वजह से सर काफ़ी हेल्प हुआ। क्या गोल रहेगा, क्या आगे जाके किस तरह से पूरा एक नई सिस्टम के साथ जुड़ने के? सर, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है कि वो विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मेरा यही गोल रहेगा कि मैं उसमें अपना एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर पाऊँ। ये जो अथॉरिटी मुझे सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, सो फॉर द सर्विस ऑफ द पीपल मैं उसको यूज़ कर पाऊँ इन अ ऑनेस्ट एंड जुडिशियल मैनर सर। तो यही मेरा गोल रहेगा हर एक स्टेप पे सर। We'll take a short break, so stay tuned for more news. Every day goes through 136 quality checks, giving you a thick and tasty, perfect cup of tea. No wonder Nestle Everyday is your #1 choice. अरे रुको, खाने को एक ही तेल में बार बार तलने से पहले रुको। ये आपकी तंदुरुस्ती और वातावरण दोनों के लिए खतरनाक है। ऐसे तेल से आपको कई खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। इसी तेल को कई बार फिर इस्तेमाल के लिए बेचा जाता है, जलाया जाता है या नाली में बहाया जाता है। पर अब रुको, रीपर्पस्ड यूज्ड कुकिंग ऑयल योजना में इसी तेल से बायोडीजल बनाया जा सकता है। इसलिए रुको, जिससे आप और आपका वातावरण दोनों फिट रहें। Welcome back. Dibanga Pushan Borua, who was reportedly assaulted by a group of people on 28 April, succumbed to his injuries on Tuesday. The deceased was attacked by a group of 20 people while he was returning home from a Bihu function in Jorhat's Chandan Nagar. The victim was rushed to Jorhat Mission Hospital, where he breathed his last. Police have meanwhile arrested 6 people so far, and further investigation is underway. The family of the victim is demanding justice. এদি হুলস্থুল কৰিছিলে ফাংচনত, সেইকাৰণে কিবা মানা কৰিছিলে বুলি শুনিছোঁ। সেইটোকে আখাই লৈ প্ৰথমবাৰ মাৰিম বুলি আহিছিলে, কিন্তু কোনোবাই বাধা দিলে, সেইকাৰণে গ'লগৈ। তাৰপিছত আকৌ আহিলে, তেনেকৈ দুবাৰ আহিলে। শেষত যেতিয়া ফাংচন শেষ হ'ল, তেতিয়া তাৰমানে সকলো ঘৰা ঘৰি যাবলৈ হ'ল। লগৰ কেইজনো গ'লগৈ, ইও সেই ঘৰমুখী হৈছিলে, কিন্তু ঘৰ নাপালেহি। আৰু লগৰ ল'ৰাজনে দেখিলে, দেখি পৰি থকাহে দেখিছে, আনি হস্পিটেল লৈ আহিলে। তেতিয়া মোক খবৰ দিছে। তাৰপৰা সি আজিতো নাজানো, বাকী হ'লে এনেই কৈছে এতিয়া যে মানে তেনেকুৱা হেৰি এটা আছে,
পানী দুনি খাই থাকে, ড্ৰাগছটো খাই থাকে, খাই মানে তেওঁলোকে টিম হিচাপে থাকি ড্ৰাগছ খাইছিলে ল'ৰাকেইটাই, ড্ৰাগছটো খাই বুলি শুনিছোঁ, কিন্তু নিজেতো দেখা নাই, শুনিছোঁহে। 10জনীয়া দল এটাই আক্ৰমণ কৰিলে নেকি? 10জন নহয়, এইটো 20-25 জন বুলি কৈছে এনে শুনাত, আৰু নিজে নেদেখিলে কেনেকৈ ক'ম এতিয়া নাজানো। আপুনি পিছত কথা পাতিছিলে ল'ৰাৰ লগত পাতিবলৈ নেপালোঁৱেই, তাৰ লগত পতা হ'লে তাক কওঁতে সি হস্পিটেলত মাতিছিলে যে নামটো সোধোঁতে কৈছিলে মুখত ফুটা নাই, মানে এইবোৰ দুখ পালে, মুখতো দুখ পাইছিলে, মূৰতো দুখ পাইছে, চকুতো চিনি পাইছোঁ, এতিয়া দেখিছোঁ। অচেতন হৈ গৈছিলে নেকি? অচেতন হৈ পৰি আছিলে। ওচৰৰ মানুহে মানে লগৰ এজনে দেখা পাই লৈ আহিলে, আনি হস্পিটেলত থোৱাৰ পিছত কৈছে। The Kangbokpe District Superintendent of Police has strongly warned uniformed personnel belonging to Kuki villages in Kangchup area not to attend a scheduled meeting summoned by a fictitious organization. All personnel are strictly warned that the announcement made by the fictitious organization is illegal, and any uninformed personnel attending the meeting will be considered to have committed gross service misconduct and strict disciplinary action will be initiated, says in police notice. The development came after a notice issued by a French group, Kangchup Area Protection and Development Committee, called on the Kuki personnel posted in Kangchup area to attend a meeting on April 30th at its office at K. Ponliel. A small private aircraft crashed during a training sortie in Gujarat's Amreli district on Tuesday, killing the pilot on the spot, said sources. The crash took place near the Shastri Nagar area, triggering panic among local residents. Preliminary reports suggest the plane was on a training flight when it went down. Amreli Fire Officer H.C. Gadhve confirmed that the team was alerted about a plane crash and rushed to the spot immediately. Gadhve said that they received information about a plane crash and reached the site without delay. The fire was brought under control swiftly. The pilot was found inside the aircraft and was immediately shifted to the hospital, while adding that the pilot unfortunately succumbed to injuries sustained in the accident. Earlier this month, an IAF pilot, Siddharth Yadav, lost his life after a Jaguar fighter aircraft of the Indian Air Force crashed near Suvarda village of Kalawad Road in Jamnagar, Gujarat. The crash was reportedly caused by a system malfunction. आज रोज 12:52 के आसपास में फायर कंट्रोल रूम में एक कॉल मिला था कि अमरेली के शास्त्री नगर विस्तार के अंदर एक एरोप्लेन क्रैश हुआ है। वो मैसेज मिलने के बावजूद तो तुरंत ही हमारा फायर टीम 3 मिनट और 22 सेकंड में यहाँ पर स्थल पे पहुंचा है। स्थल पर पहुंचने के बाद आग पे काबू लिया गया है और एक पायलट जो अंदर दिख रहा था उसको निकाल के 108 के माध्यम से हम लोग ने हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया है। ये एरिया पूरा रेसिडेंशियल एरिया है, जिसके कारण पूरा एरिया सर्चिंग किया है और दूसरी कहीं पे कैजुअल्टी या कुछ नुकसान नहीं, उसके लिए सर्चिंग किया गया है। एक फैटल हुआ है जो पायलट है उनका, और उसको 108 के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया है। West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on Tuesday asserted that outsiders were responsible for the violence that erupted in parts of Murshidabad over the Waqf Act, and said she would visit the troubled areas in the first week of May to evaluate the situation. Banerjee also said her government would soon expose the conspirators behind the riots that took place in the wards of Tulian in the district. Governor C.V. Ananda Bose had on April 19 met family members of a man and his son who were killed during violence over Anti-Waqf Amendment Act protests in Murshidabad district, and assured them of all possible support. At least 3 people, including a father and son, died and over 280 have been arrested in connection with the violence earlier this month. দুটো ওয়ার্ডে হয়েছে, সেটাও বহিরাগতরা কিছু লোককে স্থানীয় সাথে নিয়ে কিভাবে করেছে সে চক্রান্ত ফাঁস আমরা করে দেব। কিন্তু মারা গেছেন যারা,
তাদের পরিবারকে আমি কথা দিয়েছি 10 লাখ টাকা করে দেব। তাদের বাচ্চাদের পড়াশোনার দায়িত্ব আমাদের এমপিরা বলে এসছে, দরকার হলে গভর্নমেন্টও নিতে পারে। তাদের বাড়ি যাদের ভেঙে গেছে বাংলার বাড়ি হবে। দোকানদারদের ক্ষতি হয়েছে সেটা আমরা সার্ভে করছি। আমি মে মাসের ফার্স্ট উইকে যাব, আমি তখন গিয়ে বাদবাকিটা দেখে করে দিয়ে আসব। এইটুকু ভরসা আপনারা করতে পারেন, এইটুকু আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। কি হলো, জল খাবে? That's all for now. For more news and updates, keep watching Hornbill TV.